Hello friends, I am Chintan Joshi from Nalanda Vidhyalaya, MORBI, and in this subject, Business Studies, Class 12, we are going to start chapter number 5, Organizing, after the completion of chapter number 4, Planning. Let me see the topics that we are going to discuss in this chapter, right? These topics are reflected after the updated syllabus given by the CBSE. Our several topics for the discussion in this chapter are: number 1, introduction, concept and definition of organizing; number 2, process of organizing; number 3, importance of organizing; number 4, structure of organizing; number 5, structure of organization in terms of functional structure and divisional structure; number 6, delegation, delegation with the concept, elements and importance. Last one is decentralization, concept and importance. Let me discuss topic number 1 in this video lecture, that is introduction, concept and definition of organizing. First of all, introduction of organizing. Organizing is the second function of management. We know that first function is planning, right? It establishes the relationship among various factors present in an organization. Basically, what organizing do, right? Organizing establishes various relationship among the different factors that are present in an organization. Now, what kind of factors and which kind of relationship organizing is going to establish in the enterprise? Let me see in further discussion. It aims at bringing together various resources, namely man, woman, machine, material and money, right? I would like to have some correction for your better knowledge. We will call that 4M, that is man. Man will include women too, right? It is a human resources. So first of all, man, machine, material and money, right? And establishing relationship among them for the accomplishment of specific objectives, right guys? We know that in the planning portion we are going to establish different goals, right? Different objectives, specific objectives for the organizational journey, right? So whatever we have specified in planning function, whatever we have planned, whatever we have set off the objectives, for that objectives accomplishment, to fulfill that objectives, over here we are going to gather various resources. These resources are man, machines, materials and money, right? And after gathering these resources we are going to create a relationship among these 4M, right? So that we can achieve, we can accomplish, we can fulfill the specific objectives, predetermined goals or objectives of an organization. Concept of organization, right? Before we move to the concept of organization, let me have some simplification with you, right? So you don't get confusion among the organization, right? So first, organize, right? To organize means to manage, to arrange, and second, organization means to enterprise, the enterprise or the company or the firm, right? It will be clear. So don't get confused among the organize means to arrange, organization means the firm, right? Don't get confused, right? So let me start concept of organizing. Organizing is the process of defining and grouping the activities of enterprise and establishing authority relationship among them. So first of all, what organizing function is doing, right? Organizing function will define and group the firm's activities, the organization's activities, the enterprise activities, right? What they are going to do, they are going to define and group the activities of enterprise. After defining and grouping the activities of the firm, what organizing will do further, right? It will create the establishing authority relationship function, right? It will create the authority relationship among these activities. Is it clear? Next one,
Once the plans have been formulated and the objectives have been specified, the next step to organize the various resources in the organization in such a manner that the predetermined objectives are achieved. First step, first process or first function of management is planning, right? Over where we are going to plan various plans, right? I repeat, we are going to plan various plans, right? Or we can say that we are going to formulate different objectives for the enterprise, right? After specifying various objectives and formulation of the plans, the next step for the management process is to organize, is to manage, right? अभी मैनेज क्या करना है वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस वेरियस रिसोर्सेज आर मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, राइट? अभी उसको किस तरह से मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है. वी हैव टू ऑर्गेनाइज दिस वेरियस रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड, राइट? उसको इस तरह से हम यूटिलाइज करेंगे, मैनेज करेंगे कि जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे जो प्लानिंग है, उसको अचीव किया जा सके. नेक्स्ट कंसेप्ट में ही कंटिन्यू करते हैं. द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज कंसर्न्ड विद डायरेक्टिंग द एफर्ट्स towards the achievement of organizational goals laid down under the planning function in such a manner that the resources are used optimally and efficiently and the people are able to work collectively for a common purpose. देखो यहाँ पर जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स है दैट इज रिसोर्सेज आर यूज्ड ऑप्टिमली एंड एफिशिएंटली, राइट? इसको एलोबरेट करना चाहूंगा मैं. जब प्लानिंग फंक्शन फिनिश हो जाता है, जब ऑब्जेक्टिव सेटिंग ऑफ की प्रोसेस में हो जाता है, उसके बाद हम मैनेजरियल फंक्शन में ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म करते हैं. अभी जो ऑर्गेनाइजिंग है वो इस तरह से कंसर्न है कि जहां पर लोगों को डायरेक्ट किया जाएगा, मीन्स एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाएगा, उसको एक्टिविटीज को गाइड किया जाएगा, इस तरह से गाइड किया जाएगा कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, प्री डिटरमाइंड जो अपने प्लान्स है, उस प्लान्स को अचीव किया जा सके. अभी उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रिसोर्सेज अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे, राइट? अभी रिसोर्सेज जब हम मैनेज करेंगे तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे, राइट? तो यहाँ पर जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड है कि हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे, उसको मैनेज करेंगे ऑप्टिमली एंड एफिशिएंटली, राइट? उसको ज्यादा से ज्यादा, राइट, विथ आवर बेस्ट एफर्ट. अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, राइट? तो जो टास्क है, जो वर्क है, वो कलेक्टिवली अचीव किया जाएगा. पीपल उसको कलेक्टिवली साथ में उसको कंप्लीशमेंट की ओर ले जा पाएंगे और वो इसलिए हो पाएगा कि हमारे जो कॉमन पर्पस है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, वो हम अचीव कर सके. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन कंसेप्ट ही कंटिन्यू करते हैं. In other words, if we want to discuss the earlier topic, in other words, organizing is the process of implementing the plans. अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लानिंग के स्टेप में, फंक्शन में हमने ऑब्जेक्टिव्स को, प्लान्स को फॉर्मुलेट किया था. अभी हम यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे by clearly defining the jobs, working relationship and effectively deploying physical, human and financial resources for achieving organizational goals. अभी हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन टास्क, इम्प्लीमेंटेशन टास्क किस तरह से करेंगे कि हम अपनी जॉब्स को, वर्किंग रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइन करेंगे. किसका पहले तो क्या टास्क करना है, कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, उसके लिए वर्किंग रिलेशनशिप क्या रहेगी, हु इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल टू whom, राइट? उसके बाद जो है इफेक्टिवली डिप्लॉइंग फिजिकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. इट इज ऑल अबाउट द मशीन, फिजिकल, ह्यूमन, मैन पावर एंड फाइनेंशियल, राइट? इट इज ऑल अबाउट मनी. Machine and material both can be included under the physical deploying part, right? So material and machines, manpower and money for achieving organizational goals. Organization के जो कुछ भी goals है, उनको अचीव करने के लिए क्लियरली डिफाइन करना,
उसको implied करवाना, उसको execute करवाना, that is all about the process, right? And it is, this process is called as a organizing. Now let's come to the definition part. Hammond has given a definition in a very simplest form, right? Organizing is the process of defining and grouping the activities of enterprise and establishing authority relationship among them. Already we have discussed these each and every words in details earlier, right? So no doubt should be there over here. Henry Ford has given definition like to organize a business is to provide it with everything useful to its functioning. देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ऑर्गेनाइज एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजिंग क्या है. टू ऑर्गेनाइज, टू मैनेज, टू अरेंज, राइट? अब बिजनेस, बिजनेस को अरेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, is to provide it everything useful to its functioning. देखो बिजनेस में जो कुछ भी काम करना है उसके फंक्शनिंग के लिए जो कुछ भी चाहिए उसको प्रोवाइड करना, राइट? इट मीन्स टू ऑर्गेनाइज. अभी बिजनेस को बेसिकली क्या चाहिए, राइट? तो उसको चाहिए 4M. अगेन आई एम रिपीटिंग 4M, राइट? Number one, raw material, M, material, machines, M, machine and tools, capital, money, again M, and personnel, that is manpower, M, right? तो बिजनेस को रन करने के लिए, उसको फंक्शनिंग के लिए जो कुछ भी रिसोर्सेस चाहिए उसको प्रोवाइड करना, उसको कहा जाएगा ऑर्गेनाइज, राइट? टू ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइजिंग. दोनों डेफिनेशन क्लियर है. पहला टॉपिक हम यहाँ पर ओवर कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फिर भी अगर किसी को कोई डाउट्स है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. इट वाज वेरी डैम वीडियो सेशन, दैट इज द easiest one for we guys, right? Hope so. No doubts should be there. Thank you, friends.